Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Welcome to this new and beautiful day. So, kids, without wasting our time, let's start our class. So, we'll start our class with welcome song. Okay, you all have to sing along with ma'am. And everyone, you are big now. You should pay attention in the class. Don't look here and there. Attentive, be attentive in the class. Okay? Okay, come on, let's start. We welcome you to school today, school today, school today. We welcome you to school today. Please come and play. We are glad to have you here today, here today, here today. We are glad to have you here today. Yes, it's a special day. Welcome, everyone. So, now, kids, we are going to sing God's Love. Okay? Start. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. So wonderful love. So wonderful love. So high, we can't get over it. So high, we can't get over it. So deep, we can't get under it. So deep, we can't get under it. So wide, we can't get around it. So wide, we can't get around it. So wonderful love. So wonderful love. All right, kids. Kids, now let's talk about the date and the day. So today the day is Wednesday. What is the day today? Yes, it's Wednesday. And the date is 28/7/2021. 28/7/2021. Why we say 7 in date 28/7? Because July is the 7th month. जैसे हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, मैम ने आपको बताया था देयर आर 12 months in a year. So जुलाई उसमें 7th नंबर पर आता है. ओके, सो जुलाई इज गोइंग ऑन. अभी जुलाई चल रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज 7 इन द डेट. ठीक है, चलो. नाउ how many days are there in a week, kids? How many days? There are 7 days. 7 days in a week. Come on, let's say it together. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Sunday is a holiday. All right. Now, let's talk about the months. So, how many months are there in a year? एक ईयर में कितने months होते हैं? 12 months. Yes, Rishal, very good. There are 12 months in a year. Come on, let's say it together. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so now kids, get your English copy. Come on and write down today's date on the top left corner of your page. Yes, so get your English copy, kids, and write down today's date. So in English, today we are going to do the concept of these, 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 or those, THOSE, these or those. ठीक है,
Chalo, first of all, read along with ma'am. Yes, so kids, you have to write the heading, no? So you have to write the heading. Look here, write down the date and write down the heading. USE, use. OF, off. THESE, these. And 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 those. Write down the heading. THOSE, those. I think now you don't have the set copies, no, with you. So you have to write the heading first. Okay? Use of TH, the, ESE, is, these. AND and TH, the, OSE, os. So the, os, those. Use of these and those. As we have completed this and that, now we are going to do these and those. So, kids, you first write down the date and then write down the heading. Use of these and those. So kids, after writing the heading, you have to pay attention here. Okay, you stop writing then and then pay attention here. Then मैम आपको जब स्टार्ट करने का कहें, then only you have to start. Use of these and those. In case of any problem related to heading या anything, kindly feel free to ask me. ठीक है? Kids, at least after writing the heading, show me thumbs up. So I can get to know that you have completed the heading part and all. है ना? Then we'll move further. Use of these and those. Shall we move further now? Okay. So kids, now you stop writing and pay attention here. You stop writing and pay attention here. Yes. So हम लोगों ने जैसे this and that पढ़ा था. We had learned this and that. है ना? This हम लोग पास की चीज के लिए यूज करते हैं and those हम दूर की चीज के लिए यूज करते हैं. The same with these and those. These is used for the near objects. जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम these यूज करते हैं. And जो चीज हमसे दूर है, the thing which are far away, जो हमसे दूर है, we use those. तो फिर difference क्या है this and that और these and those में? The only difference is that के this and that एक चीज के लिए यूज होता है and these and those एक चीज से ज्यादा के लिए यूज होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज चौक. ये चौक मेरे पास है, सो आई कैन से दिस इज चौक. ठीक है? बट अगर ये चौक एक से ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी, तो फिर हम यूज करेंगे दीज. हम ये नहीं कहेंगे दीज आर चौक. हम ये नहीं कहेंगे दिस आर चौक. वी से दीज आर चौक. समझ में आया? जब कोई चीज एक होती है तो उसके लिए हम दिस एंड दैट यूज करते हैं. बट अगर कोई चीज एक से ज्यादा हो जाए, 2, 3, 4, 5, many, so we use these and those for that things. ठीक है?
जैसे मैम ने अभी आपको बताया, अगर एक चौक है, दिस इज वन चौक, तो आई से दिस इज द चौक। बट अगर ये चौक एक से ज्यादा हो जाएगी, 2 हो जाएंगी या फिर 3 हो जाएंगी, तो मैं दिस यूज नहीं करूंगी। आई कांट यूज दिस, आई यूज दीज आर चौक। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? वन के साथ हम दिस दैट लगाते हैं, एंड मैनी के साथ जब एक से ज्यादा हो जाए तो वी यूज these and those. The same thing, these are used for the near things and those are used for the far things. जो चीज हमसे पास है उसके लिए we use these, and जो चीज हमसे दूर है for that we use those. ठीक है, now I'll show you some example. Look here. बेटा, it's not important to write जल्दी लिखकर कंप्लीट करना, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पर ध्यान दो एंड समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोस एंड दिस एंड दैट। ठीक है ना? सो लुक, look, there is one boy standing, है ना, here also and here also. Now look, stars boy से दूर हैं कि पास हैं? You tell me. These stars are near to boy or far away from boy? Far. वो stars जो हैं वो boy से far हैं, दूर हैं. So we use these for it. These are stars. And देखो वहां पर वन स्टार से ज्यादा है, दे आर मेनी स्टार्स, सो वी यूज दीज स्टार्स। अगर यहाँ पर एक स्टार होता तो वी यूज दिस, बट अभी एक से ज्यादा है तो हम यूज करेंगे दीज। ठीक है, इन द सेम वे नाउ यू सी, ये बलून्स बॉय के पास है, नियर है कि फार हैं? द बलून्स आर नियर टू बॉय और फार अवे फ्रॉम बॉय? दे आर नियर टू बॉय, वो बॉय के पास हैं और एक से ज्यादा है, they are more than one, so we use those are balloons. Are you getting me? This and that and these and those में यही difference है। this and that हम one के लिए use करते हैं, one star, one balloon, and these and those we use for many, 2 stars, 3 balloons, 4 cars, एक से ज्यादा के लिए use करते these and that, sorry, these and those। ठीक है, these is all right, so sorry, we use those here, the stars are away, far away, okay, so sorry kids, the stars are far away, so we use those, and the balloons are near, so we use these। in this way, ठीक है, सो सॉरी, दोज हम दूर के लिए यूज करते हैं, दीज हम पास के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, ये बॉय से स्टार्स दूर हैं, द स्टार्स आर अवे, फार अवे फ्रॉम बॉय, सो वी यूज दोज हियर, दोज आर स्टार्स, एंड द बलून्स आर नियर टू बॉय, सो वी यूज दीज आर बलून। ठीक है, दूर के लिए हम दोज यूज करेंगे एंड नियर के लिए हम दीज यूज करेंगे। ओके, दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज में बस ये डिफरेंस है कि दिस एंड दैट वन के लिए यूज होता है एंड दीज एंड दोज मैनी के लिए यूज होता है। ऑल राइट, शैल आई रिपीट वन मोर टाइम? देखो, ये जो स्टार्स हैं, दीज आर फार अवे फ्रॉम बॉय, सो वी यूज दोज हियर, यहां पर हमने दोज यूज करा है। यस पर बेटा, जो चीज हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दोज यूज करेंगे, जो चीज हमसे दूर है एंड मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए वी यूज दोज। ठीक है, एंड द थिंग्स विच आर नियर टू अस, जो चीज हमसे पास है एंड एक से ज्यादा है, मेनी है, तो वी यूज दीज। ठीक है, फार अवे थिंग्स के लिए वी यूज दोज
एंड नियर थिंग्स के लिए वी यूज दीज. ऑल राइट. एंड ये जो थिंग्स हैं दे आर मोर देन वन, एक से ज्यादा होनी चाहिए. इन दैट केस ओनली वी यूज दोज एंड दीज. एक होगी अगर तो हम दिस एंड दैट यूज करेंगे, बट अगर एक से ज्यादा हो जाएंगी तो वी यूज दीज एंड दोज. लुक, दिस इज अ बुक. क्योंकि ये एक बुक है तो आई विल से दिस इज अ बुक. बट अगर मैं एक से ज्यादा ले आती हूँ, लुक, सो क्या मैं दिस यूज कर सकती हूँ, दिस आर बुक? नो, आई यूज दीज आर बुक्स. ठीक है. मैनी के साथ वी यूज दीज एंड दोज, एंड वन के साथ वी यूज दिस एंड दैट. एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम? चलो, नाउ विल डू द सेंटेंस ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so kids, write down number 1. Right from here. Visa, ma'am, first of all, Arav, you come at time, join at time, join in time, okay? Be punctual in the class. And secondly, I told in the beginning only that you have to get your English copy. It is not in the book, the homework page is in the book, but this you have to write in your copy. Arav, join in time, be punctual. You have to write in the copy only. Number 1. Okay. Dash ARERBALLS. Balls. So kids, now look here. How many balls are there? 1, 2, 3, 4. So they are more than 1. एक से ज्यादा हैं balls. तो हम this और that तो use नहीं कर सकते. So we use these or those. अब आपको देखना है कि वहां पर these आएगा कि those आएगा. What we are going to use? These or those. So the balls are near or far? ये जो balls हैं ये पास हैं कि दूर हैं? Is it near or far? Yes, they are near. ये हमसे पास हैं. So पास के लिए, near के लिए हम क्या यूज करेंगे? These. 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 These are balls because the balls are more than one. है ना, एक से ज्यादा हैं and ये हमसे पास हैं. They are near. So we use these. 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 These are balls. Say and write. ठीक है? Say and write. Read the sentence. The board is visible to you all? ठीक है kids? Two conditions are there for using these and that. The first one is कि जो things हैं, जो objects हैं, वो एक से ज्यादा होने चाहिए. Okay? अगर more than one होंगे then only we have to use these and those. अगर one होंगे तो we use this and that. The only difference is that, है ना, between these and those and this and that. जब कोई चीज एक होती है तो हम this और that यूज करते हैं, बट जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो वी यूज these and those. ठीक है. अब these कहाँ लगता है, those कहाँ लगता है? So the things which are near to us,
ऐसी चीजें जो हमसे पास हैं, उसके लिए वी यूज these, THESE. And the things which are away, which are far away from us, जो हमसे दूर हैं, for that we use those. So, any problem, anyone? You kindly ask me. Number 2. Dash, ARE, B, ALLO, OONS, balloons. Dash are balloons. Now, look. So, the balloons are near or far? Balloons जो हैं वो दूर हैं कि पास हैं? They are far. So, जैसे मैम ने आपको बताया, जो चीज भी दूर होगी और एक से ज्यादा होगी, उसके लिए we use those. Those are balloons. THOSE. Those are balloons. These are balls. Those are balloons. Again, I am repeating the things which are more than one. ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा हैं, more than one. So, for that, for those things we use these and those. और जो चीज हमसे पास है और एक से ज्यादा है, उसके लिए हम these यूज करेंगे. एंड जो चीज हमसे दूर है, फार है एंड एक से ज्यादा है, उसके लिए we use those. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है. देन ऑल्सो इफ यू हैव प्रॉब्लम देन आस्क मी. बट जब मैं आपसे पूछूं देन आपको पता होना चाहिए. ठीक है? When I take the test, when I ask you about what is the difference between these and those, this and that, so you should know what is the difference. Number 3. Write down. Kids, one more time I'm repeating to you. Whenever you are sneezing, yawning, coughing, anything, you should cover your mouth. These are the parts of your etiquette. Understand? Now shall we move to for next sentence? Done, everyone? Or should I wait for you? Okay, Limakshi. All right. Now the next one is dash are trees. TREES. Look, there is one bland. TR. So these dash are trees. So now you see, are the trees are near or are they far? ये जो trees हैं, ये पास हैं कि दूर हैं? आपको ये देखना है. Are they near or are they far? So they are near.
ये ट्रीज पास हैं और एक से ज्यादा हैं, so what we use these, THESE, these are trees. Read it and write it. You always have to read first before writing. Whatever you are writing, you should read it first and then start writing in the copy. ठीक है? So these trees are near to us. So we use these are trees. Can I raise the first one? Okay, so kids, ma'am do not have space here. So I am writing the next sentence there. But you should write in continuity. Fourth, dash are CAPS, caps. Look, so in this sentence, dash are caps. Caps are near or are they far? Caps जो हैं वो near हैं के far हैं? वो पास है हमारे के दूर हैं? They are far away from us. They are far away from us. So for the far things, we use those. 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 Those are caps. Read it and then write. Because the caps are far away from us and they are more than one, so we have to use those. 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 Those are caps. Okay? Now next, number 5. Number 5. So dash are birds. Dash are birds. So the birds are near to us. Birds हमारे पास हैं and they are more than one. So we use these. 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 These are birds. These are birds. Purvi, where are you?
Kids, without asking me, you don't have to go anywhere. ठीक है? These are birds. Now, number 6 is dash R CUPS, cups. 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 Okay. Now you see the cups are far away from us. जो cups हैं हमसे दूर हैं and they are more than one. So we use those here. Those are cups. Done. Now, those who have completed